Hello friends, welcome to my channel Mittu Sir Classes. Now I am going to discuss about the Indian polity, governor versus state government. Governor versus state governments. Okay. Next, governor versus state governments are basically divided into five parts. Governor and governor versus governor of states are divided into five, basically divided into five parts. First one is the major problems. Second one is discretionary powers. Third one is the constitutional provisions. Fourth one is judicial pronouncement. Last one is the important points. Last one is the important point. Okay. Next, major problems. Major problems. Major problems क्या है? Affiliation based appointment politicians. Affiliation based on the appointment of the politicians and former bureaucrats affiliated with the ruling party. Affiliated with ruling party in the center have been appointed several instances as governor. Center has appointed the several instances of the governor. जो हम कौन होची पॉलिटिशियन आ ब्यूरोक्रेट जो अपॉइंटमेंट करा जाउची तादरे कोन होची सेंटर माने केंद्र भूमिका सेंटर भूमिका होची अति गुरुत्वपूर्ण से कोन होची रूलिंग पार्टी जे तो सेंटर जे थबो से मैक्सिमम कोन गवर्नर आ ये मन को अपॉइंटमेंट करिवे से माने misuse of discretionary power. Next one is the misuse of discretionary powers. Discretionary power, these discretionary powers of governor, this discretionary power of governor has been misused in many instances. माने केते क्षेत्र रे कोन होची ए जो ताकर discretionary power टाको misuse से मान करू. Okay. Last one is no clear distinction between the constitutional and statutory role. No clear distinction between the statutory and the constitutional role. The constitution's mandate to act on advice. The constitutional mandate to act on advice of the council of ministers. The constitution कौन करे? Council minister को कौन करे? ताको किसी advice करे बा किसी उपदेश दिए. Clearly distinguished from the statutory authority of chancellor, माने chancellor बा जो यूनिवर्सिटी मान कर छंदी से मान को पे कोन हुए जो किसी गोटे मैंडेट बा ये प्रकाश करा जाए, resulting in many conflict between the governor and the state government. ता भीतर कोन हुए conflict सृष्टि हुए क्या मध्य रे गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के भीतर किसी conflict द्वंद्व सृष्टि हुए कहीं द्वंद्व सृष्टि हुए धर तो आमर सीएम जोटा ये कले से गवर्नर ताको ये माने ठीक से कले पकई रखी देले से मान को कले से दरकार पड़े से मान कोर्ट को जाई परिबे एटा होची कोन होची ताका भीतर नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोन हुए कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टैट्यूटरी पावर भीतर एटा गोटे बड़ा प्रॉब्लम सृष्टि करे. Next, constitutional loopholes. Constitutional loopholes. In the constitution, there are no guidance for exercise of the governor's powers. In the constitution, there is no guidance of the exercise of the governor's powers in case of the appointment of chief minister or dissolving the assembly. In case of the appointment of the chief minister or dissolving of the assembly. माने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल है कोन होची गवर्नर को किसी पावर नहीं जे से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करैबे आ डिजॉल्व करिवे सेमती किसी तांकर ये नहीं तांकर रोल नहीं सेटा जो रोलटा होची कोन सेमन शासक दलर ए रोलटा. नेक्स्ट वन discretionary power. First one is sending a report to the president of India for imposing the president's rule article 356. Sending a report to the president of India for imposing a president's rule article 356. से कौन गवर्नर को कौन डिस्कशन पावर होला से गोटे रिपोर्ट बनै कि कोन करिवे राष्ट्रपति को पाखु पठेबे राष्ट्रपति को पठेला द्वारा राष्ट्रपति मनोनीत करी कोन करिवे राष्ट्रपति शासन जारी करिवे राज्य रे. नेक्स्ट, reserving certain bills passed by the state legislature for a consideration of the presidents of India. Reserving certain bills
reserving certain bill passed by the state legislature for the consideration of the president of India. केतक बिल को किसी रिजर्व को रखिए जोटा को राष्ट्रपति मोहर मारिबे से बिल दे सेटा तापरे कोन आइन रे परिणत हबो. Next one, appointment of chief minister when the no party has a clear majority in the state legislative assembly. Appointment of the chief minister when no party has a clear majority. When no party has a clear majority in the state legislative assembly. In the state legislative assembly. से गवर्नर को पावर कहले से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट दे केते बेले जदि कोनोसी पार्टी मेजॉरिटी कर नथबे से जहा चाहबे ताकू देबे किंतु 6 मास भीतर कोन हबो इलेक्शन से जितवा पड़िबो. नेक्स्ट, इन टाइम्स ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन. इन टाइम्स ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन कोनोसी प्रकार नो कॉन्फिडेंस मोशन को ये करा जिवो नै. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक प्रोविजन कौन से तांकर अछि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. फर्स्ट वन, आर्टिकल 153. आर्टिकल 153 says that Article 153 says that there shall be a governor for each state. Article 153 says that there shall be governor of each state. One person can be appointed governor for 2 or more. One person can be appointed governor of 2 or more states. माने आर्टिकल 153 बଳରେ कोन होची प्रति स्टेट रे जण जण गवर्नर रहिबा दरकार केता क्षेत्र रे कोन होवे ना दुई दुईटा राज्य रे मध्य गोटे जण गवर्नर दुई दुईटा राज्य को परिचालित करंती. कारण कोनसी गवर्नर जदि रिजाइन दे देले कि गवर्नर को डेथ हे गेला कि तांकर कोनसी ये पई सीटा फांका रहला अन्य राज्य राज्यपाल ताको कोन करिवे हैंड ओवर करिवे. ओके. Next one, the governor is appointed by the president. The governor is appointed by the president by warrant under his hand and seal and hold office under the pleasure of the president. Article 155 and 156. माने कौन होई छथि the governor appointed by the president. माने प्रेसिडेंट उदार कोन गवर्नर नियुक्ति पाइबे कोन हुए प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड ता हाथ दिया जाए कोन सील एंड होल्ड ऑफिस अंडर द प्लेस. माने से कोन सबले राष्ट्रपति को गोटे इच्छाधीन गवर्नर को नियुक्ति होची राष्ट्रपति को इच्छाधीन कार्य. से को आर्टिकल ले आर्टिकल होची 155 एंड 166. ए बीटा आर्टिकल बଳରେ से गवर्नर प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट करिवे. Next, Article 161. Article 161 states that governor has the power to grant pardons. Article 161 states that the governor has the power of pardons or repressive etc. माने आर्टिकल 161 बଳରେ गवर्नर कोन करिवे राजक्षमा देई परिबे गोटे लोक को मृत्युदंड रु मध्य रक्षा करि परिबे. नेक्स्ट, the advice of the governor binds the head of the state. The advice of the governor binds the head of the state. माने गवर्नर को जो एडवाइस ता से कोन होय स्टेट गवर्नमेंट ऊपर पूरा पूरी जाए. Next, Article 163. Article 163 that there are the councils of ministers. Our Article 163 state that there should be a council of ministers. Minister headed by the chief minister, headed by chief minister to aid and advise of the governor in the exercise of his function expect the some conditions for the discretion. माने हमर को आर्टिकल हैला आर्टिकल 163 बଳରେ कोन होची माने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछंती तांकर हेड की होचंती चीफ मिनिस्टर ए माने कोन करिवे गवर्नर ठारो किछि एडवाइस देबे एवं से एडवाइस को देई से किछि कार्यक्रम करिवे. ओके. Next one, Article 200 gives the power of governor to assent, withhold, assent and reserve the bill for the consideration of the president passed by the legislative assembly. माने कोन होची आर्टिकल 200 बଳରେ कोन होची गवर्नर जो बिल ता को assent माने जोटा को मोहर मारि थांते से राष्ट्रपति के उद्देश्य रे मध्य सेटा को लेजिस्लेटिव असेंबली माध्यम रे पठाई परिबे. Article 361. Article 361 states that governor of the state shall not be answerable
to any court for the exercise and performance of the power and duties माने आर्टिकल 361 माने कोन करिवे गवर्नर कोन करिवे तांकर कोनसी ये को माने आंसरेबल हे परिबेनी माने धरन एक्स पावर एक्सरसाइज करिवे कि परफॉर्मेंस कोनसी एटा करि परिबे नाही ओके ने फोर्थ पॉइंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट फर्स्ट वन in 974 in the 974 the Supreme Court of India delivered a judgment. The Supreme Court of India delivered a judgment highlighting that the governor was no clear power and should act in the aid and advice of the Council of Ministers. माने कहला 974 रे हमर जो उच्चतम न्यायालय को माने गोटे जजमेंट देले जे माने हम गवर्नर ऑफ स्टेट माने राज्य सरकार को कोनसी ये को माने मिनिस्टर को से एडवाइस करि परिबे नाही तमे एटा करो एटा न करो ओके नेक्स्ट वन as for the Nabam Rebia case in the year 2016 in the year 2016 the governor cannot employ his discretion and should strictly abide by the and advice of the cabinet of the summons assembly for the protest माने एटा कोन जी तांकर जो सुमन रेबिया केस रे गवर्नर कोन करिवे कोनसी डिस्क्रिप्शन ऊपर कोन करिवे तांकर माने जो कैबिनेट को समन करि परिबे नाही ओके नेक्स्ट पॉइंट important points first one is the no criminal proceeding shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. No criminal proceedings shall be instituted by the governor of the state in any court during his term of office. कौन से criminal proceeding governor माध्यम रे हबने. Next one, the emolument and the allowance of the governor of the state shall be not be diminished during his term of his office. माने गवर्नर को जो सुविधा सुयोग एवं जो दरमा दिया जाए सेटा तांको पीरियड मध्य रे सेटा कम करा दिबो नाही द emolument and allowance of the governor of the state shall not be diminished during his term of his office okay next one the chief secretary is chosen as the chief minister of not the governor. The chief secretary is chosen by the chief minister not governor मान chief secretary की अपॉइंटमेंट करंती मान चूज करंती chief minister करंती governor करंती ओके आज तो अपॉइंटमेंट ऑफ द chief secretary is an executive action माने जो अपॉइंटमेंट ऑफ द chief secretary is executive action of the chief minister it is taken the name of the governor of the state कौन को देता निया जाए कौन governor को नाम से निया जाए ओके next one the governor makes a customary address the members of the houses at the commencement of the first session of the year प्रथम सेक्शन आरंभ हबारे गवर्नर कोन कोनती माने हाउस रे कोन कोनती तांकर वक्तव्य भाषण रखंती ओके थैंक्स ऑल ऑफ यू प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन थैंक यू